Friends, let's start with today the chapter work, energy and power. Let's first know about work, right? Give heading work. Friends, what is meant by work? To do work, you have to give some force. If no force is given, no work will be done. Yes or no? And second is, if you're giving force, let I'm giving some force, and the body should move, the body should displace, certain displacement should be there. That means work is basically associated with force and displacement. How much force you are applying and what is the displacement. It is going to decide what is work, right? So if from physics point of view, I'll say, students, there are two quantities, right? Let I am multiplying, I have already told you about, let I am multiplying a vector with a vector. If the result is coming a vector, then we apply which product? You know, vector multiplied with vector gives a vector. We apply which? We apply cross product, right? We apply cross product or vector product. But student, here work depends on force and work also depends on displacement, right? Means let I am giving some force, no displacement is there, so work done is zero. And without force, displacement can be possible, right? So work depends on force and displacement. More force will be given, more work will be done. More displacement means actually more work is done. Let I am giving same force. One body is getting more displacement, another body may get small displacement. So where the displacement is more, at that case I can say also the work done is more, right? So force is a vector quantity, correct? Force is a vector quantity, displacement is a vector quantity, but work is not a vector quantity, it is a scalar quantity, correct? Work is a scalar quantity, right? And one vector multiplied with a vector gives a scalar. That which product will be applied in physics? Scalar product, right? Scalar product, you know, dot product. Scalar product, we also say it as dot product. Correct. Scalar product, or we also say it as dot product. When dot product means let A vector is there, dot V vector, then that is magnitude of A into magnitude of V into cos theta. Theta is the angle between A and B. Theta is the angle between A vector and B vector. Already we have learned those things earlier. Yes or no? We have already learned those things earlier, between angle between A vector and B vector, correct? Understood? Just see. So here I can write work is equal to force into displacement, and W is equal to what? F dot S. Force is a vector quantity, displacement is a vector quantity, but work is a scalar quantity. Let we are driving a vehicle, right? Can you say that today the vehicle will go in only north, or can you say the vehicle will only go on south direction? So there is no specific thing for work done, right? So work is a scalar quantity, correct? Work is a scalar quantity. Understood? Yes or no? So let's see. So WF dot S means, so finally we can write W is equal to Fs cos theta, correct? W is equal to Fs cos theta, right? So this theta is the angle between force and displacement, right? Theta is the angle between force and displacement. Theta is the angle between force and displacement, correct? Right. Just write it. Way. Let there is an inclination, right? There is an inclination, and this angle is let this angle is theta, say. Let this angle is theta for say. Anything you can take. If this is theta, this is 90 degree. Yes or no? Let a body is at this position, correct? And the body is getting displaced from this position to this position. This is the displacement. There are various forces acting on the body. If I'll say about the application force, there is some force acting in this direction, there is some force acting in this direction, normal force is acting in this direction. But let first say, I'm saying its weight is acting in this direction, mg. Mg is a force, that is weight force, correct? Let force is acting in this direction. Getting, student? But body is getting displaced in this direction. All understood? The force, the weight force is acting vertically downward direction.
and the displacement is in this direction. Okay, so if this angle is theta, this angle could be theta. Yes or no? If I'll say you find the component of this force along S, then you can write that this is F cos theta, no doubt. Correct? If I will say the displacement of, if this is theta, this is going to be theta, na? Yes or no? And I asked what is the component of this force along the displacement, then you make the one component will be F cos theta, another will be F sin theta. Okay. If I'll say you to find the component of this displacement, so then you can write one will be along this direction, S cos theta, another will be along this direction, that is S sin theta. Is that clear? That means there are two components of displacement. One is S cos theta, one is S sin theta. There is two components of force also. One is F cos theta, one is F sin theta. Then can I multiply this component of S sin theta? Can I component the component of displacement is in that direction, but the force is acting in this direction? Can I multiply? No. Can I multiply this component of force with displacement? Because force F sin theta is acting in this direction. So I have to consider what? Either I have to consider the component of displacement along the direction of force, or I have to consider the component of force along the direction of displacement. Getting my point? That means I can write work is equal to two things I can write. See, if this is S, then what component of the force is acting along displacement? That is very important, right? Getting or not? So I can write here S is here and the displacement is F cos theta, correct? If from this point of view I'll write, then the displacement is, see here, the component of displacement is S cos theta and the force is F. Are you able to get my point? Literally I want to say that displacement, yes, work is equal to force in displacement, but by that we can't say that work is equal to force in displacement, correct? So if this is displacement, this is F cos theta, this F cos theta is what? Component of displacement, the component of force, right? This is component of force, right? This is component of force along the direction of displacement, along the direction of displacement, along the direction of displacement, just right? Component of force along the direction of displacement. Okay, and if I will say what is this? This is force. Yes, force. This is S cos theta. S cos theta is what? The component of displacement along the direction of force. Component of displacement. Component of displacement along the direction of force. Along the direction of force, just right? Component of displacement along the direction of force. That means always keep in mind, we can take the arbitrary, the displacement will be in that direction, the force will be in this direction. We have to take, we're multiplying two things. Can you multiply? Something is on other direction, something is on other direction. We can't multiply because finally the work is scalar quantity. In vector multiplication, you can make one vector, the direction will be simple. But there is no direction. Right? So you have to take the component of displacement which is acting along the direction of force, and also you have to take the component of force which is acting along the direction of displacement. This was the main purpose of this diagram. One thing I'm saying, so finally we got to know work is equal to Fs cos theta. Theta is the angle between force and displacement, right? Let I told theta is equal to 0 degree, then work will be how much? Fs. Let I'll be saying theta is equal to 90 degree, then work done will be how much? Cos 90 is 0, so work done will be 0. Let I'll be saying theta is equal to 180 degree, then work is equal to cos 180 is minus 1 minus Fs. So when force and displacement are in same direction, then work done is maximum or work done is positive, correct? And when both are perpendicular, then work done is 0. And when both are acting in opposite direction, then work done will be minimum, and that is negative, correct? Let's take a few examples for that. Just let here in this case, let there is a step, correct? A person is taking something on the head and he is moving up. वो इस तरह जा रहा है ऊपर. So वो ऊपर नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है. पहले केस में मान के चलो he is coming down, right? वो नीचे की तरफ आ रहा है. He is getting displaced in the downward direction. So उसकी weight जो है, actually there are so many things you can see. I will give examples on that in different bases. But अगर मैं यहाँ पर gravitational force की बात करूँ, that means the weight of the person is acting in which direction? In this direction, mg.
correct? That is the weight force. Matlab I can write F gravitational force, and the body is also getting displaced in the downward direction. Displacement is also in downward direction. The gravitational force is also in downward direction. So both are acting in same direction. So you can see the force of gravity is in downward direction and the displacement also in same direction. So angle between them is zero. So work done by gravitational force, is going to be how much? Positive or maximum? Yes or no? But let the person is applying some force that is carrying on his head in the upward direction. Yes or no? He's applying some force in the upward direction. If I'll be asking work done by applied force, work done by applied force, I just asked. Work done by applied force. These things you have learned in your high school 9th class, right? Once again, just recapitulating the things, then we'll go to our extra things. So work done by applied force. Applied force is acting in the upward direction, F applied. But is coming down, so the displacement you see 180 degree, correct? If I'll be asking the work done by applied force, then in this case, the displacement is in downward direction, but he is applying the force in upward direction. So what is the angle here? 180 degree. So that means work done by applied force is going to be negative. Understanding the point, students? Yes or no? और let the person is going in upward direction. अगर मैं ठीक उसी तरह मैंने थोड़ा कैसे इसको इंटरचेंज कर दिया, ये आदमी ऊपर की तरफ जा रहा है. जब ये आदमी ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क हो रहा है अगर मैं बताऊं तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ. एंगल कितना है उन दोनों के बीच में? व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? The angle between them is 180 degree. So in that case, gravity, if the person is going upward, ये steps में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इन दैट केस द ग्रेविटेशनल फोर्स जो पहले पॉजिटिव हो रहा था जब नीचे डिस्प्लेस हो रहा था, अभी ऊपर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 180 डिग्री में है. अभी जब ऊपर जा रहा है, अगर मैं अप्लाइड फोर्स की बात करूं तो अप्लाइड फोर्स भी ऊपर की तरफ भी डिस्प्लेस हो रहा है, तो दोनों केस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो थोड़ा आपको ये भी देखना है कि मैं कौन सी फोर्स के दौरान वर्क डन निकाल रहा हूं और एंड इट इज एक्टिंग इन व्हिच डायरेक्शन, करेक्ट? ये हुआ अपोजिट एंगल के बारे में. अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक इंसान एक रोड पे जा रहा है, राइट, और उसने सवारी पकड़ के जा रहा है ऊपर में, तो वो इज डिस्प्लेसिंग इन दिस डायरेक्शन. बट अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, एफ ग्रेविटी अगर बात करूं, नीचे की तरफ काम कर रहा है. अगर अप्लाइड फोर्स की बात करूं तो वो भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है. एफ अप्लाइड ऊपर की तरफ वो दे रहा है और ग्रेविटी नीचे की तरफ. कोई भी हो, एफ अप्लाइड हो या एफ ग्रेविटी हो, बट डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा है ना. इन बोथ द केसेस हियर थीटा इज 90 डिग्री एंड हियर आल्सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट? तो इन दोनों केसेस पे क्या हो रहा है? Work done is equal to 0. W is equal to Fs. F dot S, force into perpendicular distance. Angle 0 है तो दोनों के केस में work done will be 0. In both the cases, the work done is going to be 0. So you have to see how, in which direction the force is acting and in which direction the body is getting displaced. That is going to give whether the work done will be positive or the work done will be negative. Just note it. Next, let's know the unit of work. Let's know the unit of work. Correct. So it's unit of work W is equal to Fs now. You know W is equal to work is equal to force into displacement, correct? If I'll say about SI unit or MKS unit, then that is how much force का unit क्या है? Newton. Displacement का क्या है? Meter. Newton into meter is also known as joule. If I'll say about the CGS unit, then that is equal to dyne into centimeter, correct? That is equal to erg. CGS unit. And if I'll ask you the relation, 1 joule is equal to 1 Newton meter and 1 Newton is 10 to the 5 dyne and 1 meter is 10 to the 2 centimeter, and dyne into centimeter you know erg, so that means 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg, correct? 1 joule is equal to 10 to the 7 erg. Understood students? अच्छा, let me to say you something. What is meant by actually, अगर मैं आपको फिजिकल सिग्निफिकेंट के बारे में बताऊं कि व्हाट इज मीन्ड बाय मतलब 1 जूल इज वर्क को कैसे हम गैस कर सकते हैं. मान के चलो स्टूडेंट, ये जो मैं डस्टर पकड़ा हूं इसका मास लेट 100 ग्राम, लेट द मास इज 100 ग्राम, करेक्ट? तो 100 ग्राम मतलब कितना केजी है? 100 by 1000 दैट इज 0.1 केजी, करेक्ट? यस और नो? और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अगर मैं इस डस्टर को मैंने अपने हाथ की पाम के ऊपर रख दिया तो ये कितना फोर्स डाल रहा है अभी मेरे ऊपर? वेट की बराबर. उसकी वेट का अगर मैं इसका ग्रेविटेशनल फोर्स F ग्रेविटी यानी तो फिर अगर मैंने वेट निकाला इस डस्टर का, वेट इज इक्वल टू F ग्रेविटी, so that is equal to how much? 0.1 into 10.
So that is 1 Newton, 0.1 kg, and weight is equal to that is 1 Newton. तो ये मेरे हाथ के ऊपर अभी ये अगर मैं इसको पकड़ के रखा हूं मतलब मैं भी तो 1 न्यूटन फोर्स दे रहा हूं, मैं उसकी वेट के बराबर फोर्स दे रहा हूं तभी तो जाके मैं उसको पकड़ के रखा हूं, राइट? सो इट एग्जैक्टली इट इज पुटिंग ए फोर्स ऑन माय हैंड 1 न्यूटन, और मैं भी इसको 1 न्यूटन फोर्स देके पकड़ के रखा हूं। अभी मैंने क्या किया, उसको 1 मीटर उठा दिया, ठीक है? आई जस्ट लिफ्टेड इट 1 मीटर, मैंने कुछ लेवल से उसको 1 मीटर उठाया। 1 मीटर समझते हो ना? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। अब जो 30 मीटर वाला स्केल, 30 सेंटीमीटर वाला जो स्केल लेते हो, एक स्केल, दो स्केल, तीन स्केल हो गया 90, फिर 10। थोड़ा इमेजिन करो चीजों को फिजिकली, व्हाट इज मीन बाय 1 जूल वर्क, ठीक है? अगर मैंने इस डस्टर को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया तो वर्क डन बाय मी विल बी हाउ मच, 1 न्यूटन into 1 meter, that is equal to 1 joule, correct? तो अप्रोक्सीमेटली आप एक डिटरमाइन कर सकते हो, मतलब एक कितना वेट में दे रहा हूं और मैं कितना हाइट तक इसको उठा रहा हूं, उसके हिसाब से आप न्यूटन मीटर के साथ कंपेयर करके आप उसको जूल की आकार पे लिख सकते हो। सो एक्चुअली हाउ मच फोर्स यू आर गिविंग, करेक्ट? अंडरस्टूड? सो यू गॉट एन आइडिया अबाउट यूनिट्स ऑफ वर्क and what is the physical significance of work? Just note it. So let's see next, work done by a variable force. Student, that means let अगर डिस्टेंस के साथ मैंने पहले 1 मीटर पे कुछ फोर्स दिया, फिर दूसरे मीटर पे मैंने अलग फोर्स दिया, फिर मतलब डिस्टेंस के हिसाब से फोर्स वेरी कर रहा है, मतलब फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। सो इन दैट केस हाउ टू फाइंड द वर्क डन? सो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेथड, मतलब कैलकुलस मेथड की हेल्प हमें लेना पड़ेगा उस केसेस पे, राइट? तो देखो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस मतलब अगर फोर्स इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है? सो वी नीड टू टेक्निक्स ऑफ कैलकुलस, मतलब अगर हम इसको देखें तो थोड़ा अगर मैं इसको एक डायग्रामेटिकली दिखाऊं, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट? सो लेट द फोर्स इज वेरिंग लाइक दिस, करेक्ट? It's not a constant function, constantly I'm not giving the force, let the force is vary, it may increase, may decrease, doesn't matter, कुछ भी तरह हम ले सकते हैं, ठीक है? फोर्स इज वेरिंग, तो मान के चलो इनिशियल पोजीशन पे यहाँ पर कुछ पोजीशन था, ये डिस्प्लेसमेंट ले लिया मैंने, इसको फोर्स लिया मैंने, लेट इनिशियल पोजीशन x1 था और कुछ फाइनल पोजीशन x2 हो गया। समझ में आ रहा है ना? द ग्राफ इज नॉट लीनियर ना, इट्स चेंजिंग, लेट द डिस्प्लेसमेंट। और मान के चलो मुझे कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैंने थोड़ा सा एक स्ट्रिप ले लिया, राइट? करेक्ट, सी हियर, let that distance is x, but the small distance is let dx, correct? So how the force is changing with the small change in displacement, और फिर हमने डिस्टेंस को पूरा इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट x1 टू x2 अगर ले लेंगे तो पूरा सारे चेंजेस को अगर हम जोड़ देंगे कि हर छोटा छोटा चेंजेस की डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, और टोटल को अगर हम सेग्रीगेट कर देंगे देन वी कैन फाइंड फोर्स। जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, just draw the diagram. So work done by the moving body from x1 to x2, right? Work done in moving the body from x1 to x2, is going to be how much? See, force is something, force is a function of the force, yes or no? That means I have to find for the small displacement, I am going to get what? The small work done, dw, and in that case let the force is F, right or not? Let the force is F, correct? So dw I have to integrate, to find work I have to integrate dw with limit x1 to x2, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से फोर्स वेरी कर रहा है, and dw is equal to, I can also write f dx, f जो कि एक फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे दिया होगा, and how that is changing with dx and limit x1 to x2. So this could be the formula if I am interested to find work done, dw, yes or no? So I can write, so work done is equal to, I can also write f dot dx, how the displacement is changing, limit from x1 to x2, correct? So this can be the method for finding the work done by a variable force, correct? Let's take one example, yes or no? और स्टूडेंट अनदर थिंग, अगर मैं कोई भी एक ग्राफ बनाता हूं, जस्ट आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मैंने कोई भी एक ग्राफ बनाया, करेक्ट? दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो ये पूरा जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एरिया हम निकालेंगे, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यू कैन राइट एरिया अंडर, आप यहां से लिख सकते हो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट F and S graph gives what? Force into displacement, area, work, right? Area under force and displacement graph gives work. Just keep in mind this one, अगर कहीं पे हमें एरिया भी दिया होगा तो एरिया से भी हम निकाल सकते हैं कि कैसे हमें वर्क डन निकालना होगा, राइट? करेक्ट और नॉट?
अंडरस्टूड? नेक्स्ट लेट्स टेक वन एग्जांपल. ठीक है, कैसे हम कैलकुलस मेथड पे हम वर्क डन निकालते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. राइट, वन एफ इज लेट एफ इज गिवन. लेट्स टेक वन एग्जांपल. लेट फोर्स जो है वो ऐसा दिया हुआ है 6x² - 3x. राइट, वन एग्जांपल, फोर्स इज गिवन 6x² - 3x न्यूटन. मतलब इस तरह ये वेरी कर रहा है फोर्स. ठीक है, और उसने दिया रखा है कि फाइंड द वर्क डन in displacing the body from 0.5 to 1.5 मीटर. फाइंड द वर्क डन, क्वेश्चन पे दिया हुआ है फाइंड द वर्क डन right, find the work done in displacing the body, find the work done in displacing the body from 0.5 मीटर to 1.5 मीटर. राइट, तो उसने x1 और x2 की वैल्यू दी रखी है और फोर्स कैसे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर उसका भी फंक्शन दिया रखा है. तो हमें इसको निकालना होगा. तो मैंने क्या बताया अभी फॉर्मूला यहीं पे कर सकते हैं हम. देखो, जस्ट सी, वी कैन डू इट हियर. सो इफ आई वांट टू फाइंड w, देन आई हैव टू इंटीग्रेट f dx x1 to x2. करेक्ट, you know the methods of, you already know the methods of calculus in your early classes. करेक्ट, तो यहाँ पर थोड़ा उसके एप्लीकेशंस पे देखते हैं. जस्ट सी हियर. सो दिस इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है फोर्स की जगह पे, 6x² - 3x dx. इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, लिमिट मैंने ले लिया 0.5 to 1.5. करेक्ट, 6x² - 3x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 6 को बाहर ले आए हमने, x² का क्या है x³/3, माइनस 3 को हमने बाहर ले आए x²/2. ठीक है, तो इसको कैंसिल करके इसका जो लिमिट होगा कहां से कहां तक होगा, 0.5 to 1.5. ठीक है, हर लिमिट और लिमिट पुट करना हम सीखे हैं मैथ्स में. 3 into 3 6 कैसे हो, कितना हो गया 2x³ minus 3/2 x². राइट, लिमिट इज फ्रॉम 0.5 to 1.5. करेक्ट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं. अब यू नो, अगर 2 को हम ऐसे बाहर निकल आए, x³ 0.5 to 1.5 माइनस 3/2 को फिर हमने बाहर ले आए, दैट इज 3/2 x² 0.5 to 1.5. करेक्ट, ये अलग सा लाइन है, इसके साथ इसको कंपेयर ये मत करना. ये अलग सा लाइन है, नीचे अलग सा लाइन है. ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ. लेट्स सॉल्व दिस वन. ठीक है, पूरा इसको सॉल्व करते हैं. जस्ट सी हियर, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच, आप बता सकते हो 2 into हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. x³ है, हायर लिमिट क्या है 1.5, मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा 1.5 का क्यूब माइनस 0.5 का क्यूब. राइट, विजिबल और नॉट. फिर -3/2 हमने ले लिए, x² है मतलब 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर. ठीक है, पूरा उसको अच्छी तरह से आपको सॉल्व करना होगा. सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो. सो इट विल बी नियर अबाउट 3.5 जूल. राइट, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखो, it will be 3.5 joule. So the work done will be 3.5 joule. Correct, the work done will be 3.5 joule.